So, hi guys, this is Suman. I'm the mechanical engineering from IIT Kanpur, right? Today we'll be discussing some physics questions related to JEE mains. निशांत आपका ना माइक ओपन है। हेलो हेलो Hello, hello. सुमन जस्ट मोमेंट। Okay. निशांत आपका ना माइक ओपन है। सुमन आप एक सेकंड होल्ड करना है। Hmm. ठीक. So, hi guys, this is Suman Das. I'm from IIT Kanpur. I will be starting a some doubt session, which is ask me anything. Hmm. Okay. Yeah. So the first one that we have is quantization of charts, right? ये क्वेश्चन शायद हमने लास्ट सेशन में भी कवर अप किया था, right? The question that goes like this: कि what is quantization of energy, right? Simple सी बात है. This is अगर मैं आपको लेमेंस लैंग्वेज में बताऊं, so this is what. देखो, अब एक बात बताओ, सपोज आपके पास एक चार्ज है, राइट? सपोज आपके पास बस कॉइन्स कुछ है जो कि बस ओनली ओनली 2 रुपए के, यू हैव ओनली 2 रुपीज कॉइन, राइट? और मैं आपको बोल रहा कि मुझे ना 5 रुपए दिखे थे, तो क्या आप मुझे दे सकते हो? हम्म, बताओ. नहीं, कभी नहीं दे सकते हो. क्यों? क्योंकि आप मुझे बस दो के मल्टीपल में ही दे सकते हो पैसे. आर यू गेटिंग दिस वन? So you can give me 2 rupee, 4 rupee, 6, 8 like this. You can never give me 5 rupee. क्यों? क्योंकि आपके पास 1 रुपए का कोई नहीं है. ठीक है. तो दिस इज व्हाट इज, तो अगर आप इसको चार्ज को रिलेट करोगे, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन एनर्जी. इसमें क्या बोलते हैं ना, सिंपली ये बोलते हैं कि यू कैन नेवर हैव, यू कैन नेवर हैव charges which are not integral multiple of e. ये मतलब, अच्छा, नेगेटिव चार्ज, राइट? चार्ज, जो चार्ज है आपके पास, वो सपोज देयर इज इलेक्ट्रॉन, राइट? वी आर हैविंग इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बताओ? इलेक्ट्रॉन इज हैविंग व्हाट 1.6 माइनस 19 कूलम. ठीक है, नेगेटिव चार्ज. तो द पॉइंट दैट कि यू कैन हैव 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन. मतलब ऐसे बोल रहे कि E इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज. ठीक है, E इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज. यू कैन नेवर हैव कि आपके पास कभी भी 1.5 ही नहीं हो सकता है. आप बोलोगे कि सर 1.5 है तो हम ऐसे कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को चार्ज वैसे कर लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन को आधा कर लेंगे ना. दिस इज रॉन्ग. You can never have 1.5 electron. You will always have charges in a body in the form of integral multiple of electrons. ठीक है. So this is called what? This is called quantization of charge. ठीक है. Hope you understand. Moving next to resolution of vectors. ठीक है. So resolution of vectors ये मैं लास्ट क्लास में पढ़ाया था, आप लोगों ने किस क्वेश्चन, then I'm again reminding it.
So if you are having a vector like this, having vector like this, then क्या होगा, इसका a में रहेगा, this will be something is wrong. Let this that to be c vector need to be equal to a vector plus b vector. तो इसका mod कितना हो जाएगा आपके पास, mod a vector plus mod b vector plus mod a mod b into cos theta. ठीक है, so this is the answer. अब resolution vector ये बोलते हैं कि कोई suppose you are having a vector which is this c vector, you can resolve these two vectors into two different directions. So says क्या कि मेरे पास अगर मान लो c vector ऐसा है करके, then I can just what, resolve it into two directions, and I can call this as v vector and this one as a vector. ठीक है, हालांकि जब ये आप मतलब जरूरी नहीं है कि आपको ये बस ये 90 डिग्री हो, बट फॉर a typical class 11 के स्टूडेंट के लिए it has to be in perpendicular direction. तो आपके पास जो एक्सिस है, you are having axis here, right? So x axis, this is y axis, this is g axis. So if you are having a vector like this, can I show you? If you are having a vector like this, then what will happen? मान लो like this, which is equal to something मान लो 5, which is having some 5 direction. This is called with this theta with theta. The magnitude be 5. Then what happened? मतलब 5 का cos means all I'm saying, you can resolve the vector 5 vector which is in the direction of theta from the x-axis, that will be f cos theta I cap plus f sin theta j cap. So this 5 vector, oh, this is not supposed to 5 vector, this should be some vector a मान लो, this a vector would be equal to mod a cos theta I cap plus mod a sin theta j cap. This is called resolution of vector. ठीक है, this is called what, resolution of vector. ठीक है, mod a. So अगर आपको देखना है, then you can just write it see like this. Suppose you are having of course 5 vector ऐसा है, there is a vector which has magnitude 5 and the degree, the angle, let's suppose is to be 30 degree, right? तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसे x and y में दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, you can just, तो इससे क्या होगा अपना, this 5 this can be written as, suppose मैं इसे वेक्टर दे दूं ऐसे करके 5 cos 30 I cap plus 5 sin 30 j cap, sin 30, this will be equal to what, 5 cos 30, cos 30 root 3 by 2, 5 root 3 by 2 I cap plus 5 sin 30 by 2 j cap, right? तो हमने क्या किया, जो अपना जो वेक्टर था जो कि इस डायरेक्शन में कुछ था, उसको हमने क्या किया, दो डायरेक्शन में तोड़ दिया, वन इज अलोंग दिस, अनदर वन इज अलोंग दिस. ठीक है, इसको कैसा आ जाए, आई कैप में कितना है आपके पास, 5 रूट 3 by 2 है. ठीक है, तो कंपोनेंट और द resolution of this vector along the x-axis will be 5 root 3 by 2 and the resolution of this vector along the y-axis will be 5 by 2, 5 by 2 magnitude. ठीक है, ऑल गुड. हाँ, इसका हम इस्तेमाल भी कहाँ पे करते हैं, मेन इश्यू देखो, जैसे ही आपने 11 स्टार्ट किया होगा, आपको रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ाया गया, राइट? सो बेसिकली रेक्टिलिनियर मोशन इज ए 1D प्रॉब्लम, जैसे 1D चैप्टर जिसमें आप बस 1D वन डायमेंशन में ही आप पूरे चैप्टर में खेलते रहते हो, और जैसे आप प्रोजेक्टाइल में एंटर करते हो, आप 2D प्लेन में आते हो, राइट? सो प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, ऐसे होता है, राइट? ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू हाइट टू ग्राउंड, देन फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, प्लस प्लस शायद हमने डिस्कस किया था उसके बारे में. तो उससे जो जितने भी फॉर्मूलेस हो गए, फॉर्मूलेस किस चीज का, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया आपका, आपका रेंज हो गया, आपका मैक्सिमम हाइट, राइट, एच मैक्स हो गया निकालना, इस सारे के डेरिवेशन में ना आप यही करोगे, क्या करोगे, तो इसका जो प्लेन में जो वेलोसिटी है जो कि 2D प्लेन में, हम उसी 2D प्लेन को तोड़ेंगे दो 1D में, मतलब उसको तोड़ने अराउंड एक्स एक्सेस एंड अराउंड वाई एक्सेस, और दोनों को सेपरेटली डील करेंगे. ठीक है, वी डील द प्रॉब्लम
So basically, you just split it out the 2D problem into two 1D problems, right? And you use your rectilinear motions in that particular 1D directions. So getting this one. So this is called resolution vector. Suppose you're having vector A, then it will have cos theta and it will have sin theta along x and y respectively. ठीक है? Okay. Moving next, you have our tension. What is tension? Uh, so basically, क्या है? When a string is stressed, the string is stressed, the separation between the two molecules, separation between two adjacent molecules slightly changes, slightly increases forces, due to which the intermolecular force, the intermolecular attractive force, appears in the body, and this intermolecular force, this molecular force is called tension. ठीक है? इसे हम क्या बोलते हैं? टेंशन बोलते हैं. This is not very simple क्योंकि we basics में आते हैं 11 में, जैसे आप मैकेनिक्स पढ़ते हो स्टार्टिंग में आपको ये बता देते हैं इसके बारे में. तो क्या होता है? हाउ टू फाइंड टेंशन, राइट? नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू फाइंड टेंशन. सो suppose you are having box like this. मान लो ये 2 kg का है और ये जो रोप है आपका, ठीक है, मान लो कि ये है यहाँ तक. आई एम टेकिंग 3 पॉइंट, ए पॉइंट, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. ठीक है, हम क्या करेंगे ना, तीनों पॉइंट पे टेंशन निकाल के देखेंगे. ठीक है, तो सपोज मान लो कि ए से बी का जो लेंथ है, ये जो रोप है, राइट, दिस रोप हैज मास ऑफ 1 kg एंड दिस रोप हैज मास 1 kg. तो अगर मैं एफबीडी बनाऊं कहां पर, अगर मैं एफबीडी बनाऊं at point C, what will happen now? Okay, so this is 2G downwards, and मान लो ऊपर कोई टेंशन लगा TC. You don't know what is the value of TC. ठीक है, अब क्या होगा ना, यहाँ पर देखो, जो आपका जो टेंशन है, TC, वो क्या कर रहे हैं, टोटली बैलेंस कर रहे हैं 2G को. और ये मैं कैसे बोल पा रहा हूँ कि मुझे दिख रहा है ऑब्जर्वेशन, द ब्लॉक इज नॉट मूविंग. गेटिंग दिस वन? The block is not moving. If the block is not moving, that means the block is in equilibrium. और क्योंकि इक्विलिब्रियम में दिस इंप्लाइज व्हाट, इसके ऊपर एफ नेट जीरो है. तो एफ नेट जीरो होने का मतलब क्या है ना, टी सी माइनस 2G इक्वल टू जीरो. दिस इंप्लाइज व्हाट, ना टी सी इक्वल टू 2G. ठीक है, ऑल गुड. अब चल लेते हैं एट पॉइंट बी. एट पॉइंट, दिस इज माय बी. सो व्हाट हैपेंस एट पॉइंट बी. बी बी पे एबीडी बनाओ, वो पॉइंट का एबीडी बनाओ. नीचे मान लो कुछ टीसी है, ऊपर क्या है आपके पास, टीबी अमाउंट. ठीक है, दिस इज नॉट टीसी. अच्छा, नीचे क्या हो जाएगा, एमजी आ जाएगा. एमजी कहाँ, किसका, ये पूरे पूरे सिस्टम में इसकी पूरे मास का एमजी आ जाएगा. ठीक है, तो ये मान लो टी नॉट मान लो. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी नॉट? टी नॉट कितना हो जाएगा भाई, ये तो 2 kg बॉक्स आ गए और 1 kg रोप का है, तो कितना आ गया, 3G नीचे आ गया. ठीक है, तो क्योंकि ये रोप मूव नहीं कर रहा है और ये, this means what, this is in equilibrium. If this is in equilibrium, the F unit should be equal to 0, and this implies what, that TB minus 3G must be equal to 0. This implies what, that TB equal to 3G. ठीक है, similarly आपको this is homework for you guys, find T. ठीक है, tension at the point A.
यहाँ इस पोजीशन पे आपको क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। ओके, तो फाइंड टी एंड पोस्ट द आंसर्स ऑन कमेंट बॉक्स। ठीक है, एनी इशू? ओके, वेरी गुड, मूविंग अहेड। ओके, सो नेक्स्ट थिंग दैट वी आर हैविंग इज रेडियस ऑफ gyration। ये बहुत लोगों का डाउट है, राइट? Many of you guys having doubt in this particular topic. You sir, what is radius of gyration? What is radius of gyration? Right? कोई इसे gyration बोलते हैं, कोई इसे gyration बोलता है। It just doesn't matter, right? Whatever you do, this is fine. No issue with that. देखो, सिंपल सी बात है, आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज मान लो आपके पास है रॉड है, इज हैविंग अ रॉड। ठीक है, इसका लेंथ L मान लो। ठीक है, ऑलराइट। अब ये बताओ कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, आई कितना होगा इसका? आप पूछोगे सर आई हम कैसे, अब तुम बताओगे सर ml स्क्वायर बाय 12, यू विल से कि ml स्क्वायर बाय 12, राइट? तो मैं बोलूंगा कि यार तुम्हें तुम्हें हाउ कैन दिस की इसका आई ml स्क्वायर बाय 12 होगा? दिस मे बी रॉन्ग। यू विल आस्क मी व्हाई सर, क्यों ऐसे, ये गलत क्यों है? तो मैं बोलूंगा कि बेटा मैं अभी तक तुम्हें स्पेसिफाई ही नहीं किया हूं कि आपका एक्सिस क्या है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आपको क्या चाहिए? फर्स्ट एक्सिस चाहिए। की कौन सी एक्सिस के अबाउट आप क्या कर रहे हो? वो आई निकाल रहे हो। गेट इट दिस वन? तो मेरा सवाल ऐसा होना चाहिए तो कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास और द सेंटर ऑफ ज्योमेट्री। तब आपका आंसर सही था, दिस इज स्क्वायर बाय 12, राइट? अच्छा, अब मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस हिंज। इस हिंज के से जाती हुई एक एक्सिस पे इस पर्टिकुलर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, बताओ। आपको पता ही है वो जो देयर आर सर्टेन रूल्स, राइट? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पता है ना सबको? बताइए होगा, ठीक है, वेरी गुड। वो कितना आ जाएगा आपके पास? आई विल बी इक्वल टू आई, हम पॉइंट मान लो पॉइंट ए है, ये विल बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 3, एल स्क्वायर बाय 3। अब देखो, अब ऐसा है, अ, देखो आपके पर्टिकुलर 11 में, राइट? आप क्या करते हो कि आप फोर किसी का एबिलिटी बना रहे हो, राइट? सो आप लेंगे फोर्स ऑन दिस लाइक दिस, राइट? तो हमेशा याद रखना बेटा कि आप जो फोर्स अप्लाई करते हो हमेशा एक पॉइंट पे अप्लाई करते हो आप। ठीक है, सपोज यार आपके पास एक कार है, सपोज यार हैविंग ए कार लाइक दिस, राइट? आपने बोल लिया इसका फोर्स एफ है, तो ये फोर्स लग कहाँ पे रहा है, इसका पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है? आप इस स्पेस पे थोड़ी कर रहे हो, बस ऐसे ही लगा दे रहे हो। बट इन रियलिटी ये जो फोर्स लगती है, हम क्या करते हैं, इस पूरे कार को एक पर्टिकुलर, जैसे बोलते हैं कि इस पूरे कार की जो मास है ये पर्टिकुलर एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो गया, एंड दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। और उस पॉइंट पे हम अप्लाई करते हैं वो फोर्स। ठीक है, गेटिंग दिस वन? तो एग्जैक्टली उसी तरह हमें क्या करना, आपके जितने भी फॉर्मूलेस है, जैसे अब आप एवरी के टाइम आप लोग जितने भी फोर्सेस लगाते हो वो सारे एक पॉइंट पे ही एप्लीकेबल होते हैं, पॉइंट पे ही लगते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, बहुत जो कॉम्प्लेक्स फिगर है और जो रिजिड बॉडीज है उसे हम उसको हम एक पॉइंट की तरह मानना पड़ेगा, राइट? वी हैव टू एज्यूम द होल बॉडी टू बी पॉइंट बॉडी, क्योंकि पॉइंट बॉडी पे ही हमारे जितने भी मैकेनिक्स का एज ऑफ तुम्हारे लेवल का सारे इक्वेशन वैलिड होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, इस रॉड को बोलेंगे कि इस रॉड के इक्विवेलेंट ऐसे कोई सिस्टम बन सकता है क्या, जो ऐसा होगा कि which will provide the equal amount of moment of inertia और एक पॉइंट भी उसका मास क्या हो, कॉन्सेंट्रेट हो जाए पूरा। अगर ऐसा हो गया तो इसका जो दूरी होगा ये कितना होगा, मान लो ये आर के। गेट इट? हमने क्या किया अभी, इस पूरे रॉड की जितनी भी मास है उसको हमने एक पर्टिकुलर एक डिस्टेंस पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया और बोला कि इस पूरे रॉड का जो मास एम था वो अभी आके इस पॉइंट पे। अब अब जो डिस्टेंस होगी इस एक्सिस से, एक्सिस रोटेशन से टू द कंस्ट्रक्टेड मास पोजीशन, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ gyration। दिस इज कॉल्ड व्हाट? रेडियस ऑफ gyration। ठीक है, इसका फायदा क्या है देखो मैं बताता हूँ। ठीक है, सपोज कि सपोज मान लो कि आपका
देयर इज एन एक्सिस, राइट, और उसने बोला कि आपका जो रेडियस ऑफ जाइरेशन है आर के, दिस इज इक्वल टू एल बाई रूट थ्री। कितना है? एल बाई रूट। अगर ऐसा है तब बताओ कि इसका मोमेंट इनर्शिया कितना होगा, आई कितना। इसका मतलब जब आर के इक्वल टू एल बाई रूट थ्री, इसका ये बोलते हमने क्या बोल दिया, जो एक्सिस की रोटेशन है इससे एल बाई रूट थ्री दूरी पर हमारे पूरा मास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट। तो जिस अगर ऐसा बोल दिया तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। एम इंटू आर क्या है, आर के स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू आर के क्या है, एल बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर। दिस इज माई एल, डोंट गेट कंफ्यूज्ड टू व्हाट एम एल स्क्वायर बाई एम एल स्क्वायर बाई। अब काई कितना आ गया, एम एल स्क्वायर बाई। ठीक है, अब ऐसा बोल दिया कि एक रॉड है, ठीक है, और उसका उसका रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या है, उसका रेडियस ऑफ जाइरेशन मान लो कि एल बाई रूट टू है, एल बाई रूट टू। इसका मतलब क्या है ना, आपका जो एक्सिस है, जो कि एक्सिस में रोटेशन है, उससे एल बाई रूट टू दूरी पर आपके पूरे मास का कॉन्सेंट्रेशन है वहां पर। यू कैन से दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑल्सो, राइट, बट हर जगह वैलिड नहीं होता है, दिस इज राइट। So there are some certain difference between center of mass and the radius of gyration. ठीक है, hope you understand. Okay guys, any issue? हाँ, इसका फॉर्मूला तो मैंने बताने भूल ही गया। सिंपली तो फॉर्मूला आपको पता ही चल गया होगा आपको, क्या होता है ये। अगर आई इक्वल टू एम एम आर के स्क्वायर अगर ये होगा, देन आर के क्या हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू आई अपॉन एम का अंडर रूट, दिस इज आई। ठीक है, एनी इशू? दिस इज योर आंसर। ओके, मूविंग अहेड वी हैव कूलम्स लॉ, राइट। कूलम्स लॉ बहुत ज्यादा सिंपल नहीं है, क्योंकि अ, ऐसा रहता है कि ये जो जस्ट कूलम्स लॉ इज ए पार्ट ऑफ द स्टार्टिंग द न्यू क्लास 12 की स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं इसे, और ये लगभग लगभग एक दो महीना चलता है पूरा, ये जो चैप्टर है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो कूलम्स लॉ बेसिकली क्या बोल रहे हैं, सपोज इन मीडियम यू आर हैविंग ए चार्ज, दिस इज Q1 एंड देन यू आर हैविंग योर चार्ज, दिस इज Q2। ठीक है, and they are separated by a distance of मान लो r, and I told distance, ठीक। मैं क्या बोलता हूँ कि कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि तो अगर ये चार्जेस है तो डेफिनेटली, अगर लाइक चार्जेस हुए तो वो रिपल करेंगे, अगर अनलाइक हुआ, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ, तो डेफिनेटली वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आई एम अज्यूमिंग दिस टू बी this general charges, right? You can have negative also, you can have positive also, so no issue there. Then कूलम्स ने क्या बोला, कूलम्स ने ये बोला कि अगर कोई दो चार्जेस है जो कि Q1 Q2 है, उसके चार्जेस मैग्नीट्यूड, and they are separated by distance r, then the force magnitude will be equal to K Q1 Q2 upon R square. Simple. This is in vacuum. The first, uh, the first, the first derivation, the first uh, definition that was given. ठीक है, ऑल गुड। अब आता है यहाँ पे, अब देखो, और क्योंकि ये जो फोर्स है, फोर्स क्या होता है, फोर्स स्केलर क्वांटिटी थोड़ी होता है कि बस आपके इसका मैग्नीट्यूड बता के आप चुप रह गए। यू कैन नेवर डू दिस, नो। अगर आप फोर्स को स्पेसिफाई कर रहे हो, you have to tell its direction and magnitude both। तो 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 डायरेक्शन के लिए उन्होंने क्या बोला ना, एफ वेक्टर विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दिस मॉड आर स्क्वायर आर वेक्टर इनटू आर वेक्टर। दिस इज नॉट आर वेक्टर, इट्स आर कैप। सपोज you just want to find this is just आर, आर वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, मॉड आर इनटू आर हैट। सो आर हैट विल बी व्हाट, आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। ठीक है, ऑल गुड, ऑल सेट। This will what f vector will be equal to k Q1 Q2 upon mod r vector का कुछ पद है, r hat है, इसको हम यहाँ से लाएंगे, इसको पुट करेंगे यहाँ पर, इक्वल टू r vector by mod r।
replace what? F vector is equal to K Q1 Q2 R vector upon mod R vector whole cube. ठीक है? All good. Suppose हाँ, चलो एक सवाल लेते हैं, जैसे एग्जांपल टाइप का। सपोज एक चार्ज यहाँ पर है और चार्ज यहाँ पर है। इसका मान लो कोऑर्डिनेट से मान लो कि 1,1,1 है, इसका मान लो 2,2,2 है। इसका कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, मतलब 3D स्पेस में इसका पोजीशन क्या है, तो उसका आर वेक्टर कितना आ जाएगा? 2 - 1 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप, ठीक है। तो इसका मोड कितना आ जाएगा बताओ? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू √3, ठीक है, ऑल सेट। तो यहाँ इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना आ जाएगा? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इक्वल टू के, कोई कांस्टेंट है, दिस इज q1, मान लो कि ये दो, सपोज टेक दिस इज 2 कॉलम, दिस इज 3 कॉलम, तो दिस विल बी 2 * 3 अपॉन मोड आर कितना है आपका? √3, तो √3 का होल क्यूब इंटू आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है आपका? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। फोर्स आपका कितना हो जाएगा? 6 2 अपॉन √3 के आई कैप प्लस जे कैप प्लस, ठीक है। तो ऐसे निकालना है दो पर्टिकुलर जो पॉइंट्स है, उनके कोऑर्डिनेट्स निकालना है, देन टू फाइंड आर वेक्टर, देन टू फाइंड द आर, देन टू फाइंड द मोड आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द आर वेक्टर, जस्ट पुट इट इन द फॉर्मूला एंड यू विल गेट इट आंसर, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। एनी इशू? चलो बढ़िया, बेहतरीन। जो भी डाउट्स है ना वो पूछ लिया करो तुम, तो सेशन के लिए आप लोग सवाल नहीं पूछो, दिस इज ओनली few questions that I get, but I hope कि I request you to just put some more question in the chat box so that we can discuss it thoroughly, right? The next thing that we have is electric field lines, right? So what are electric field lines? Electric field lines basically represents the E net in a particular space, right? Suppose you are having a charge over here. इस चार्ज की वजह से क्या होगा ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स क्रिएट होंगे, और इस ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स दे विल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड्स, दे विल हैव व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जो कि इको पोटेंशियल सरफेसेस पे हमेशा परपेंडिकुलरली होते हैं, ठीक है। तो देयर आर अ फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो, द चार्ज इज पॉजिटिव, देन डेफिनेटली इट विल emit out, the electric field lines will emerges from the positive charge and will submerge in the negative charge, ठीक है, also very good। Next क्या है? The third one that I have is electric field at a particular point, suppose this point, this is the electric field, this will show the E net, मतलब क्या है कि मान लो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ऐसा है कोई चार्ज की वजह से, एंड ड्यू टू अनदर चार्ज Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट लाइक दिस वन। सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, एक ड्रॉ कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस डायरेक्शन, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड will show the E net. It is the resultant of all individual electric fields, ठीक है। So and the next point that I have is, कोई अगर suppose you are having electric field like this, and if you draw a tangent line like this, so this tangent will show the direction of electric force and electric field simultaneously. Suppose there are in a 3D space, you are specified with the electric field lines, then, and you want to find direction of the electric force field and the electrostatic force at that particular point. Then you're supposed to draw a tangent to that curve, then you get the answer. Right? So this direction, the tangent direction will give the direction of
both F vector and inverter. ठीक है, any issues? No issue? Very good. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस लाइक दिस। क्यों? बताओ क्यों, बताओ क्यों। क्योंकि बता चुका हूँ यार, दिस थर्ड पॉइंट को देखो, क्या थर्ड पॉइंट क्या बोल, थर्ड पॉइंट में ऐसे बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, देन दैट इज द ई नेट, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द ई नेट। तो अगर मान लो अगर मान लो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस भी कर लिए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर टाइम, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इसका ई नेट ऐसा है, और सेकंड टाइम में क्या बोल रहा हूँ, इसका ई नेट ऐसा है। तो हाउ कैन ए पॉइंट हैव टू ई नेट्स एट द सेम एट ए पोजीशन, एट ए पर्टिकुलर पोजीशन यू कैन नेवर हैव टू ई नेट्स। क्योंकि नेट का मतलब ही ये होता है कि फाइनल प्रोडक्ट। आप बोल रहे कि पर्टिकुलर पोजीशन में आपके पास दो ई नेट है, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, दैट्स नॉट। नेक्स्ट व्हाट यू हैव, नेक्स्ट इज more the density, more the strength, more the, suppose you are having like this is not, यहाँ पर देखो डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पर डेंसिटी कम है, सिंपलेस्ट व्हाट, अगर डेंसिटी यहाँ पर जहाँ पे ज्यादा होगा वहाँ पे स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, राइट, यू विल हैव हायर इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक, the next point that you have is electric field lines can never be in a circular closed loop. Electric field lines, electric field lines can never be in a closed loop. ठीक है, क्यों नहीं सकता बताओ, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जो ऊपर के 6 पॉइंट्स है ना, उन्हीं से अगर ये लूप में एग्जिस्ट किया तो इट विल वायलेट द 6 पॉइंट्स। बताओ कौन से। सपोज मान लो ये वाला पॉइंट, तो यहाँ से हमने देखा इस डायरेक्शन में कि यहाँ से ऐसे एरो निकल रहा है, दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। एट द नेक्स्ट टाइम, अगर नेक्स्ट मोमेंट आप क्या बोल रहे हो ना, इस पॉइंट पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सबमर्ज भी हो रहा है, तो दिस इज नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ कैन ए पॉइंट बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, गेटिंग दिस वन। तो आप देखो यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, अगर ऐसे निकल रहा है तो आप बोलो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ओके। देन नेक्स्ट अनदर स्टूडेंट कम एंड ही टोल्ड कि नहीं सर ये तो नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबमर्ज हो रहे हैं। ठीक है ना, और गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट। और नहीं समझ में आया तो पूछो, सोचो एक बार। ठीक है, सोचो, माय टीचर इज टू से सोचो। चलो, ठीक है। हाँ, बट मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर एग्जिस्ट इन ए क्लोज लूप, बट इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एग्जिस्ट इन ए क्लोज लूप। This is a bonus point to all you guys who are attending this lecture live. Thank you all. Right. The electric field can never exist in a closed loop, but induced electric field will always exist in closed loop. ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। So we are having our next eighth point, that is what, the number of lines of line is similar to the this point, the active proportional to magnitude of magnitude of charge. ठीक है, all good. Okay, moving ahead. रोटेशनल मोशन, अब इसमें मैं क्या ही बोलूँ, रोटेशनल मोशन मतलब आरबीडी होता है, रिजर्वोयर डायनामिक्स। इसमें इसमें हम मोमेंटम इनर्शिया निकालते हैं एंड इसमें आई निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, वी फाइंड अल्फा, वी फाइंड देयर आर वास्ट अमाउंट ऑफ स्टफ्स इन हियर। सो बेसिकली रोटेशनल मोशन क्या बोलते हैं, दिस इज रिजिड बॉडी एंड रिजिड बॉडी, there can be pure transmission, it can be pure rotational, it can be not pure, it's just mix of। जब आप इसे इंडिविजुअली पढ़ रहे थे, मैंने अब अगर नहीं पढ़े तो, अगर आप इसे इंडिविजुअली पढ़ोगे तो अच्छे लगेगा, बहुत इजी है। अगर इसे पढ़ोगे तो बहुत इजी लगेगा। जैसे ये मिक्सअप हो जाएगा ना, तब ये बन जाता है एडवांस का सवाल, जे एडवांस। ठीक है, तो जे एडवांस का लेवल ये होता है, दिस मिक्सअप बोथ बोथ दिस रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन। सो वी आर नॉट गोइंग टू दिस,
we simply uh, write the main definition of rotational motion. What is the main definition of rotational motion? It says कि if all the particles, if all the particles of a rigid body are under circular motion, are under circular motion about a line, and the line for x is at rest with respect to a initial such as ground, and this is called pure rotation. This is called what? Pure rotational motion. ठीक है, मतलब देखो बेसिकली यार रोटेशनल मोशन बहुत बहुत बड़ा टॉपिक, मतलब जैसे मैंने सवाल देखा तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं एक्सप्लेन क्या करना है इसमें, right? So I'm just giving the a main definition or the first definition that you will study or you have studied when you started the rotational motion and RBD volt. This is called Dipole dynamics. Right here you have your parallel axis theorem, perpendicular axis theorem. ठीक है, इससे बहुत सारे. This is the most difficult chapter in class 11, and this is the most favorite chapter or the most loved chapter by the advance. So if you are preparing for the advance, just make sure कि आप इसे अच्छे से पढ़ के जाओ. Right? हमको जेमी सोचो. Moving ahead, we're having electric dipole. So what is dipole? Why dipole? Why there is no tripole? Listen, suppose you're having a neutral body, right? Neutral body, then what will happen? जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है आपके पास नेगेटिव भी है. ठीक है, देखो एक न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है, ऐसा नहीं. सपोज ए बॉडी इज न्यूट्रल, दिस डजंट मीन कि उसके पास चार्ज नहीं है. सिंपलेस्ट व्हाट, कि उसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज है उतनी क्या है अमाउंट में इसका नेगेटिव चार्ज. ठीक है, अब क्या होगा, मान लो देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लस 2 ओवर हियर और देयर इज नेगेटिव चार्ज ऑफ माइनस 2 ओवर. तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. तो इन कंबाइन, इन वो दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ए, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ठीक है. क्योंकि ऐसा समझो आपको जितनी मटेरियल्स है, ठीक है, मटेरियल्स है, दोज आर मेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. दिस मॉलिक्यूल्स आर मेंट ऑफ डाइपोल. डाइपोल से ही सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, आपके पास ना इसका यू हैव ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस डाइपोल. दिस क्या है, दिस इज डिनोटेड बाय वेक्टर p वेक्टर, दिस इज इक्वल टू q इनटू l वेक्टर. q इनटू l वेक्टर. l क्या है, l इसका l दिस इज. हमें से याद रखना है यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है. नोट द पॉइंट दैट टू बी नोटेड इज द डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव. ठीक, हमें से याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो क्योंकि ये आस्क मी आंसर क्वेश्चन है पर इसमें हम डिटेल में से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, पर इस डाइपोल को आप यू विल फाइंड द electric field, you're gonna find the potential field with this dipole. तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका आ जाएगा, दिस इक्वल टू kp बाई आर क्यू रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, थीटा क्या है आपका, सपोज यू आर हैविंग प्लस 2 हियर माइनस 2 हियर, दिस इज योर थीटा. एक पर्टिकुलर इस पॉइंट पे आप चाहते हो कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, then you can use this formula kp. p is what, q into l. ठीक है, l क्या है, इन दोनों का दूरी. आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड. ठीक है,
ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले है आपके पास। विल जस्ट विल जस्ट फाइंड इट। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस टॉपिक दैट वी हैव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब क्या बताऊं, मतलब ये इलेक्ट्रो आपका पूरे 12th का फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? सिंपली इट्स द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और आप पूरे 12th में आप ये तो करते हो, हाँ कि ना? जैसे कि आपका क्या होगा, इलेक्ट्रो वन इलेक्ट्रो टू कैपेसिटर हो गए, ये सारे चार्ज एड्रेस पे। ओ पता नहीं क्या बिल्कुल सही था। जो बेसिकली आप क्या करते हो, पूरे चैप्टर पूरे 12th में तीन चीजें पढ़ते हो, अगर आपको अगर ध्यान दोगे तो। आप पढ़ते हो चार्ज को एट डिफरेंट पोजिशन एंड डिफरेंट वेलोसिटी एंड डिफरेंट एक्सेलरेशन। अगर आपका चार्ज रेस्ट पे, अगर आपका चार्ज रेस्ट पे है, देन आपके पास तीन चैप्टर्स आते हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो वन, एंड यू हैव इलेक्ट्रो टू, एंड यू हैव कैपेसिटर। अगर आपका जो चार्ज है, राइट, एट कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, देन आपके पास आता है चार चैप्टर। क्या है? करंट एनर्जी, मैग्नेटिज्म आ गया, और अब क्या होता है, ईएमआई आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड यू हैव अल्टरनेटिंग करंट एसी। और अगर आपका चार्ज एक्सलरेट करने लगा, देन विल हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो मतलब आपके लेवल पे तो बहुत कम ही दिया है। ठीक है, इफ यू कम टू आईआईटी, इफ यू which I want all of you should come. I want you guys to come to IIT and see how beautiful it is, right? Okay. If you come to IIT, then you're gonna study a little bit higher, not very much higher, about electromagnetism. When a charge accelerates, तब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, then वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं वो, राइट? पॉइंट विल हैव पॉइंट वेक्टर एंड ऑल्सो। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो कि आप पूरे ट्वेल्थ में पढ़ते हो। सो आई कैन नॉट समराइज, मैंने बस समराइज किया एक, बट एक स्लाइड में, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये पूरा 12th आपको एक साल लगता है, राइट? मे बी 1.5 अगर आप सक्सेस पढ़ोगे। सो आई होप यू गेट ओवरऑल आइडिया हाउ टू डील विद दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो विल मूव अहेड, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल हमारा इंतजार कर रहा है आफ्टर 2 और 3 स्लाइड्स। सो जस्ट कॉलिंग मी कि आ जाओ मुझे सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट। दिस इज द मॉन्स्टर आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, सो हाय मॉन्स्टर। Suppose ऐसे मतलब ऐसे मान लो this is odds, you know what is odds? I everything is fields. This is a सवाल of typical J advanced। आपकी अगर आप एनसीईआरटी और जे लेवल का कर रहे हो तो दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज, ठीक है, दिस इज सवाल ऑफ एडवांस। ये क्या बोल रहे हैं? आपके पास 12 रजिस्टर है, ठीक है, हैव 12 रजिस्टर्स, इसका की रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, कोई बात नहीं। ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब, इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब। The bottom face is connected to a battery B through opposite corners. Then find the current in each branch. The find the current in each branch. देखो इसका जो, अगर आप एडवांस की तैयारी करोगे ना, तो ऐसे मान लो कि दिस पर्टिकुलर सवाल इज 1 और 2 लेक्चर, क्योंकि इसे हम बोलते हैं बॉक्स प्रॉब्लम। इज कॉल्ड व्हाट? बॉक्स प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, देखो ऐसा रहता है, यू आर हैविंग हो गया ना, डोंट स्ट्रेस। दिस इज कॉल्ड बॉक्स प्रॉब्लम। जैसे मैंने कितने तो दिखाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही दिखाए, पीछे 4 है, ठीक है। मतलब
अरे ऐसे मान लो क्यूब है ना आपके पास, ठीक है? तो क्यूब के हर एक साइड में आपको एक रेजर रखा है, मतलब यहाँ पर भी, 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 हियर हियर हियर, एवरीवेयर। एंड क्या बोल रहा है कि जो बॉटम फेस है जो कि नीचे है, उसके कॉर्नर मतलब यहाँ पे ऐसे लेके और ये वाला पोजिशन, ठीक है? यहाँ पे आपने क्या किया, बैटरी लगा दी, ठीक है? तो बेसिकली बॉक्स प्रॉब्लम में ना हम तीन तरह मेनली इसे डिफरेंशिएट करते हैं तीन तरह की प्रॉब्लम में, मतलब तीन मेनली। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज, जैसे हम क्या है आपको देखो, suppose this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 corners, 8 vertices are there. So the first thing that we have is what? Body diagram. Body like जो क्या है, this 6 point and this 4 point. Imagine कर पा रहे हो, 6 is at the other face, 4 is the other face. This is body diagram. तो अगर आपका बैटरी लगा है ऐसे, इन दोनों के क्रॉस में लगा है, ठीक है? Then the whole R equivalent will be equal to R equivalent will be equal to 5/6. इसे याद रखना बस। इसका डेरिवेशन बहुत गंदा है, नॉट गंदा है, लाइक इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये इसका डेरिवेशन जो आता है वो आता है सिमेट्री से आता है, राइट? सिमेट्रिक एजेस एंड सिमेट्रिक फेसेस, symmetric planes, you apply symmetric planes and just find the answer, right? So this is to ball diagram. Okay. Second, suppose again we are having one, two, three, four, five, six, seven, and eight. Seven are called as, ठीक है? What it says now, ये अगर आपको ये 4 point और 1 point, इन दोनों के विषय में अगर आपने ये लिखा, you just need to find the R equivalent in this between these 2 points, then it will be equal to, it will be equal to 7/12, ठीक है? Basically, okay. And the next that we have is this, this is example one of 40 units. It's called phase diagonal R equivalent. phase diagonal कौन सा है? मान लो this is 2 and this 7. अगर आप चाहते हो कि इन दोनों के बीच में ऐसा एक बैटरी लगा दो और एंड यू जस्ट नीड टू फाइंड द R equivalent, that will be equal to 3R/4, 3R/4, ठीक है? So just summarize it, the whole box problem, E F B will be equal to 7R/12, 3R/4 and 5R/6, ठीक है? ओके ना? इसे याद रख लो, ठीक है? ऑल आई एम सेइंग कि इसे याद रख लो क्योंकि ये डेरिवेशन आपको समझ में नहीं है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एक मतलब आप अगर एडवांस की कर रहे हो तो आपको आना ही चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं कर सकता, ठीक है? दिस इज ड्यू टू टाइम कंसर्न अदर सोर्सेस, ठीक है? तो जस्ट मेमोराइज दिस वन, दिस इज द आंसर। एंड जो भी सवाल को पूछा है वेरी गुड, आई ऐसे ही सवाल पूछते रहो, राइट? ये सवाल करने में ना मजा आता है, ठीक है? सो आस्क दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल दिस। थैंक यू।
So moving ahead to our next question. This is called. This is not exactly a question क्योंकि इन्होंने पूछा है कि सर कुछ ट्रिक्स बता दो फॉर बेसिक कैलकुलेशन। क्या ही बताऊं ट्रिक्स फॉर बेसिक कैलकुलेशन। ड्यूरिंग माय जे टाइम मेरे तो कोई टीचर सेशन नहीं बोला था। बस माय टीचर्स टोल्ड मी कि आप बस प्रैक्टिस मोर एंड विल डेफिनेटली योर कैलकुलेशन विल बी वेरी फास्ट। सो tricks for basic calculation, do practice more questions. That's it. This is the only trick that we have for JMS, not for JMS, for any competitive exam. There are no shortcuts. ठीक है, you are supposed to do practice. You are supposed to मेहनत करना पड़ेगा आपको, ये बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो do practice more and more. ठीक है, ठीक है, देखो ये दिस इज फिजिक्स राइट, ये तो बायोलॉजी नहीं कि आपको जस्ट मेमोराइज करना पड़ेगा आप, नहीं दिस इज फिजिक्स। और मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को जो बोलते हैं कि सर फिजिक्स के इतने बड़े बड़े फॉर्मूले से हमें याद नहीं रहते। मैं बोलूंगा कि यार फिजिक्स फिजिक्स मतलब फिजिक्स में फॉर्मूले से याद थोड़ी रखना होता है। फिजिक्स में आप एक सवाल लगाओ, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, दो सवाल लगाओ नहीं रहेगा, 10 लगाओ, 100 लगाने पर याद रहेगा कि नहीं, बस वही। तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन, this is the only basic and simple trick for basic calculation. So obviously, whoever asks this question, I hope I hope you just find out a solution. The trick that is practice more. Okay. So moving next, here you have the last question of this session. Right. This is the matter in our surrounding. The matter in our surrounding. Typically, this is this is a chapter in class 9. Right. अगर आप CBSE से हो and अगर आप 9 class में किए हो, which I guess you have, देन आपको इसे द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें बहुत सारे बताते हैं, पर पता नहीं इसमें क्या बताऊं। इसमें मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इज देयर, व्हाट इज मैटर। मैटर इज मैटर इज मैटर इज एनीथिंग दैट हैज सम स्पेस एंड ऑक्यूपेशन वॉल्यूम इन द free space, that is called matter, right? And matter मैटर में बहुत तीन प्रॉपर्टीज होते हैं बेसिकली। देयर आर थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दैट इज लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पर जैसे जैसे समय बढ़ता गया और दो फेजेस पे ऐड हो गए, जैसे कि द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सुपर कूल। जैसे अगर आप मैटर को बहुत ठंडा कर दोगे, दैट इज कॉल्ड सुपर कूल। एंड अनदर वन इज सुपर हीटेड, आई थिंक दैट इज कॉल्ड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, समथिंग लाइक दिस। हाँ हाँ, ये अभी ऐसा, हाँ, आई गॉट। अगर आप मैटर को बहुत कूल कर लोगे, दैट इज कॉल्ड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। बोस इज एन इंडियन साइंटिस्ट एंड there is we have Einstein, so they both collaborated and this found this fourth state of matter that is called Bose-Einstein condensation, right? And if you just superheat the matter to a very extreme temperature, a very high temperature, and that is called your plasma, right? That is pure plasma. Okay, so there are five forms of matter. There are five phases of matter, you can say. And there are some properties of matter. मुझे सेकंड अगर एक मैं रिकॉल कर रहा हूँ, यू आर इन 11th, आपको आने चाहिए सर। ठीक है, okay, anything else? No, nothing else. So, just revisit कि हमने क्या पढ़ा आज। What does some charge आपको याद रहेगा? I'm just summarizing all steps right in 4 minutes. The first is what does some charge, मतलब आपका smallest unit क्या है? E, which is the charge of electron, okay, which is equal to 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. You can never have a body which have 1.5 electron or 2.5 electron. It will always have its charge in an integral multiple of electron. Here you have resolution vector. Simply
बेसिकली तोड़ना होता है, राइट। रेजोल्यूशन वेक्टर तब काम आता है जब आपको 2D या 3D प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व करते हो, जस्ट वांट टू डू इट सेपरेटली इन वन वन डे। अब आपके पास रोटेशनल मोशन है जो कि 2D में है, you just want to split the 2D motion into two 1D motions, right? And just do the analysis separately. That is called resolution vector. वहां पे काम आएगा आपके resolution vector. सेकंड इज कॉल्ड टेंशन। टेंशन आपको याद रहना चाहिए। दिस इज वेरी सिंपल, राइट। या एंड या फाइंड दिस टी है, ठीक है, होमवर्क है, करके आना भाई, ठीक है ना। डूइंग दिस रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या बोलता है? सिंपल सी बात है कि ये पूरे पूरे सिस्टम को, जितना बॉडी है आपको, उसकी मास को कहाँ पे हम कंसंट्रेट करें, बस तो एक्सिस रोटेशन से उस पूरे बॉडी की मास को कहाँ पे हम कंसंट्रेट करें, ताकि जो मोमेंट ऑफ इनर्जी आ रहा था जब ये पूरा बॉडी ओपन रहता था और अभी जाके है, वो दोनों सेम आते। क्या बोल दिया सर ने, कुछ समझ में नहीं। हाउ मेनी ऑफ थिंकिंग लाइक दिस? मैंने क्या बोला, सोचो। मैंने ये बोला, देखो स्लोली बोलता हूँ, ठीक है, कि देर इज एन एक्सिस रोटेशन and there is a body, there is an axis rotation, and there is a body like this. This is rotating around this. So it will have some moment of inertia, right? Right. तो इस पूरे बॉडी को, पूरे जितने भी मास है इसका, इसको मैं चाहता हूँ कि इस एक्सिस से कुछ एक्स दूरी पर जाके यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कराऊँ इसे, यहाँ पर इस दूरी पर। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, सोचो। थिंक अगेन, थिंक अगेन। फिजिक्स ऐसी चीज है कि जितना पढ़ाओगे उससे कुछ नहीं होता, आपको सोचना पड़ेगा। यू हैव टू यूज योर माइंड, योर ब्रेन। Then there you have a Coulomb's law. This is simply a vector equal to k q1 q2 upon mod r का whole q into r vector. ठीक है। Then have electric field lines. These are some properties of electric field lines जो कि आपको याद क्या रहना चाहिए. This is very obvious. Then you have a rotational motion जो कि RBD जिसे हम बोलते हैं. Right. It is both dynamics. We have a lots of things to do here in this particular chapter. Moment of inertia, alpha हो गया, toppling आता है इसमें. And this is the, as I told, this is the most favorite chapter of J advance and J mains. Right. Going again, we have electric dipole. Dipole क्या होता है? इलेक्ट्रिकल बॉडी में देर आर ऑलवेज चार्जेस आर इन पेयर, तो एक पेयर को हम बोल देते हैं डाइपोल बोलते हैं. We have a electric field due to this dipole, electric potential due to this dipole, and everything. Like, in fact, there is a dipole moment, if you know, P cross E. Yeah, P cross E. मुझे याद है. वो. Then we have electromagnetism. What is electromagnetism? It's simply the interaction between the electric field and magnetic field. Right? तो मैंने आपको बताया कि बेसिकली चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नथिंग बट द स्टडी ऑफ चार्ज. चार्ज अगर इस पे रहा तो तीन चैप्टर आगे हमारे 12th के. अगर आपका चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहा है, देन यू हैव फोर चैप्टर्स ऑफ क्लास 12. देन इफ योर चार्ज इज एक्सेलरेटिंग, then you have one chapter that is electromagnetic waves, which is very interesting. Okay, so this is only all about electromagnetism. Then we have this monster. This is not monster. This is a good question. Right? This is a particular specific case. This is called box problem. Right? We have the border diagonal. This is called border diagonal. If there is border diagonal, then the R equivalent will be equal to 5R by 6. Right? If you have edge, the R equivalent will be equal to 7R by 2. And having the battery, or you need to find the R equivalent in the first diagonal, then it would be equal to 4R by 3. ठीक है. There's a text on basic equation. ठीक है. So these this is what we study in this session. तो I hope कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा. ठीक है, थैंक यू. तो जो भी आपके डाउट्स है, डू कमेंट ऑल दोस इन कमेंट बॉक्स. अच्छे से सवाल पूछो यार, क्या ही सवाल पूछो. समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, गिव मी सम चैलेंजेस फॉर. ऐसे थ्योरेटिकल मत पूछो. थ्योरेटिकली पूछ सकते हो, बट
I want you guys uh, to be more advanced and ठीक है. Okay, thank you all, bye bye.